lines. You just let me know which line you do not understand. You have to give names to each of those lines, by the way. I'm going to help you because this is your first chapter. This is how you are going to treat class 11th and 12th. Like you have to identify, you cannot say that, sir, I don't understand this chapter. Sir, I don't understand this. Sir, I don't understand this question. When the solution is present, then what you need to do is you need to analyze each line and then see that, okay, fine, which of the line I'm not able to do on my own. यानी कि वो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है. You cannot even understand, okay, fine, this is the next step that I have to do. So I will give names for each of those lines. In the first and second line, I'm writing whatever is given to me and extracting whatever I can from that given information. I'm not looking at the question right now, what they're asking, but I have been given Na2SO4, I have been given the molality. So molality into volume is equal to number of moles. So I can get more number of moles. Maybe it is useful, maybe it is not useful. It doesn't matter right now. If you have been given some information, then extract all the information that you can. Then and then only you will say that, okay, fine, everything is given to me. Otherwise, most of the time, what you will see a question and you will see that something is missing in the question. This question is incomplete. It doesn't look right. Okay. So whatever value has been given, what you need to do is you need to extract whatever you can from that particular value first of all. So that's what we have done in the first and second line. Na2SO4 and BaCl2, we have been given the mass. For BaCl2, we calculated the number of moles. We have been given volume and molarity. I calculated the number of moles. If you don't understand how I calculate number of moles of Na2SO4 or BaCl2 that I've indicated in red also, you can let me know. The third step, I'm doing, I'm writing the balanced chemical equation for Na2SO4 plus BaCl2, which is given to NaCl plus BaSO4. Then we are calculating the MCR, then we are calculating the MCR, then we are comparing the MCR. Once we have compared, we are determining the limiting reagent. Then we are equating the MCR of limiting reagent, that is BaCl2, with the MCR of product, that is BaSO4. After that, we are just doing calculations. If you don't understand calculation, just let me know that. Then we are doing calculation of for the mass of BaSO4. Okay? So try to read this and then tell me what step or what line you did not understand. Okay, Jasleen? Sir, I don't understand how we got the limiting reagent from Okay, thank you. this. Okay. So now, whenever you will have a doubt, I will refer back to theory point. So can you find in your notebook where you have written regarding limiting reagent? We wrote a point. Yes, When sir. the amount of two or more reactant has been given, then determine. Can you read that line for me? When the amount of two or more of the reactants is given, then calculate MCR of each reactant. The Mhm. reactant with the least value of MCR will be called limiting reagent. Read it once more. The reactant with. Sorry, sir. You read the last line that you read, no? The reactant with least amount. Can you read it once again? Uh, your mic is off, by the way. The reactant with least Sir, I amount. can't. Can you please keep your mic on? You see. Sir, can you repeat? Your voice is really feeble. Oh, okay. I'm saying, can you read that line? The reactant with least Um, value of. the reactant with least value of MCR will be called limiting reagent. Now, can you do the acha okay thing? Like I said, are you having difficulty in this comparison? Like I am comparing these two values, or you're see, once you have compared these values, and if you're okay with this sixth line, that you understand that in the MCR value of Na2SO4, sorry, Na2SO4 होना चाहिए, Na2SO4 is greater than that of BaCl2. If you understand this line, then from that theory line that you have written, the reactant with least amount of the least value of what MCR. So here we have two reactants, Na2SO4 and BaCl2, which is having least value of MCR, BaCl2. BaCl2 will be limiting reagent. Now it makes sense. Yes, sir. Got it? Yes, sir. Pakka? Yes, sir. Okay, thank you. देखिए आज के ऐसे वही बच्चे
Sabiha and Shama, when you are late, can you please tell me why are you late? Plus, this is better than you. Yes, Sabiha and Shama. What time do you come back, Sabiha, from school? Shama, you have not told me. Like, why are you late? Sabiha, then you should be on time, no? Shama, what about you? I have not got anything from you. See, you wasted my time by coming late, then you are wasting again my time by not answering. Hmm. One more thing, guys. If you want to update anything regarding the chemistry class, please message me. If you are messaging this, I have told this in the last class also. You have to message me that I will delay it. You have to message me, okay, for the chemistry class. You will get scoldings if you are going to message Learnivio because I cannot tell them to like message me immediately whatever message you are getting. They are getting. Okay. So if you are late, if you are having any problem, if you are not going to join, जो कुछ भी है, the communication is should be with me and me only. At least for the chemistry class. I cannot say about the other classes. ठीक है. तो जिस तरह की कमिटमेंट हम आपसे चाहते हैं ना उतने ही कमिटमेंट आप लोग को भी देते हैं. You can message me anytime with regarding the doubt. You can message me anytime regarding like what sir I have solved this. Can you please check it? ठीक है. तो जिस तरह का कमिटमेंट हम आपसे चाह रहे हैं ओनली दिन क्या आप लेट आइए एबसेंट कीजिए 5 दिन मत आइए उसके बाद भी आई हैव टू बी लाइक दैट ओनली कि आप जब भी डाउट पूछे तो हमको करना ही पड़ेगा. ठीक है. बट मन खराब होता है इससे. शाइमा यू हैव नॉट रिप्लाइड. अभी तक आपका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है. आर यू नॉट इन द क्लास और व्हाट? Jasleen, do you have any class after this? No, sir. Sabiha, do you have any class after this? No, sir. Shaima and Zainab. Zainab, do you have any class after this? The class starts at 4 o'clock now. So we are okay till 6 now. ठीक है. उसके बाद हाफ एन आवर होगा. यू कैन आई विल ओनली बी डूइंग questions, so you can watch that later or 6:30. Fine. If it is 4 to 6, and then also it's fine. I think the class starts at 4 o'clock KSA time. So, ठीक है. चलिए. Please here, guys. Today it's going to be a very long class. I want to check your patience today. We are going to solve many numericals today. I want the answers on my WhatsApp. Again, Shaima is not answering, so I have to inform them.
Now we have this question. I think some of you guys did this question. Let's complete this question right now. That is fine. Yes, again. Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. N2 plus H2 gives 2NH3. Calculate the mass of ammonia produced if 2 kgs of dinitrogen reacts with 1 kgs of dihydrogen. Will any of the two reactants remain unreacted? If yes, which one and what would be the mass? This is the question. So first of all, what we need to do, we need to take in the values, whatever it has been given to me, जो भी information को दिया, please leave a pen aside and try to understand this. We have N2 plus H2 gives 2NH3. Okay, N2 plus H2 gives 2NH3. Now, if I want to balance this equation, then I have 3 to the 6 hydrogen. So I will plug in 3 here. Now, next I will see what is the amount of nitrogen given to us. Nitrogen, what do we have? Number of moles, it is equal to given mass. Given mass is how much? 2000 grams. Divided by, what is the molar mass of dinitrogen? The molar mass of nitrogen will be 14 plus 14, that is 28. I will leave this value like this only. Then I will see for hydrogen what they have given. They have given us the mass, and then I will calculate the number of moles, which will be equal to 1000 divided by 2. So I can write this as 500. It is easily solvable. Now we are going to calculate the MCR. If I want to calculate the MCR of N2, it will be what? Number of moles divided by the stoichiometric coefficient. Now, number of moles, it is equal to how much? Number of moles is equal to 2000 divided by 28. Then coefficient is what? 1. So divided by 1. Now, number of moles of H2, if I want to calculate the MCR, this will be equal to the number of moles divided by the coefficient of the hydrogen. Number of moles, it is equal to 500. The coefficient of hydrogen is equal to 3. Now, we need to calculate which is the lower value. Okay. Now, we just have to compare these values. So what we are going to do, we are going to use some kind of mathematical tricks and have approximations regarding the values here. So what I am going to do here is, I will make this 500 2000. How I can make this 500 2000? I can make this 500 2000 by multiplying 4 in the numerator and 4 in the denominator. So this will become 2000, right, divided by 4 is 12. Now, if I compare the values here, I have 2000 upon 28 and I have 2000 upon 12. Obviously, this value is going to be what's going to be larger. Okay. So I can say that. All of you understood this point? Yes or no, please tell me, first of all. The numerator is same, denominator, जिसका denominator छोटा उसकी value बड़ी. The smaller the denominator, the value will be greater. Understood, Jasleen? Yes or no? Yes, sir. Sabiha, Shaima, Zainab. Yes, sir. Sabiha, yeah. Now, सर आपने 4/4 से मल्टीप्लाई क्यों करा वहां पे? So what I need here is, we need to compare the MCR, right, Sabiha? Yes, sir. Okay. So I need to compare it, right? So I have 500 divided by 3. Yes, sir. Okay. 500 divided by 3, and here we have 2000 divided by 12. 20. No, 28, no? 28, हाँ 28. 28, right? So I saw that if I multiply this 4 and by 4, then I can compare the numerators. Yes, sir. Okay. And I can compare the numerators. That means I can equate the numerators with difference हमको सिर्फ denominator में देखना पड़ेगा. Like the other way was that I divided 2000 by 28 and then I divided 500 by 3 and then I compared the values. So that will be long. Like division will take time. So what I did, I made the numerator 2000 so I can easily compare it. Make sense? Yes, sir. Okay. So like sir, we can use like convenient number, like कोई भी question में सीधा same Yeah. करने. Yes, correct. Our aim is to compare the MCR, right? Because I want to choose a limiting reagent. I need to compare the MCR. I don't want the values of MCR per se. Right? I don't want the values also. I don't want the values in decimal at least.
Fractions I need obviously in order to compare. So what I will do, I will use any number that is feasible and that works for me. You can change that number according to the question. Make sense? Yes, sir. Okay. Next we have now once we compare the MCR, then we can say that MCR if I am going to compare, then for H2 it is greater and for N2 it is smaller. So which will be the limiting reagent? Tell me, guys. N2. Very good. Yes, N2. Limiting reagent is N2. Now all the calculation will be done according to N2. What is the question asking? Will any of the two reactant remain unreacted? Yes. So N2 is a limiting reagent. I think we have written a point in the limiting reagent portion that limiting reagent is that reactant which gets completely consumed. So N2 will be completely consumed. H2 will be remaining. So I will write here. Yes. What would be remaining? H2 will be remaining. ठीक है? Hydrogen will be remaining. थोड़ा सा रुकिएगा. 14 चाहिए रहता है, इसमें 6 चाहिए रहता है ना. ठीक. Yes, N2 is a limiting reagent. If yes, which one and what would be its mass? How much? That means they are asking the mass that is unreacted. Okay, unreacted hydrogen they are asking. So here also what we need to do, limiting reagent is N2. Now I will calculate how much N2 is reacting with H2. Okay, so calculation is going to be easy. ध्यान से देखते रहिएगा बस जरा. Limiting reagent is N2. I need to calculate amount of H2 reacted. Amount of H2. Here also you have to do the same thing. यहाँ पे भी आपको क्या करना है? We don't know the amount of H2. You are not going to plug in the values whatever is given to you. Right now you don't know how much amount of H2 has reacted. ठीक है? So whenever when we write the MCR equation, that is only for when the reaction has occurred and that is only for whatever has reacted. ठीक है? Now I will write MCR of N2 is equal to MCR of H2. I'm writing in the bracket that has reacted. So you can understand when you're reading the note. That has reacted. This equation of MCR, it is only valid for whatever has reacted and whatever has formed actually. It is not going to take part, it is not going to consider what is unreacted. The MCR of N2 we have actually we have the fraction 2000 upon 28. 2000 upon 28. Now, one mistake that you guys can do here is that you have calculated the MCR of H2, but this is the MCR of H2, that is the total H2. Now we need to calculate only for reacted. So for that, we need to write the formula. So what you will write here? This is equal to number of moles of H2 divided by the coefficient. Now, number of moles of H2 will be equal to, coefficient will go that side. Coefficient of H2 is 3 multiplied by 2000 divided by 28. Anything into 28 will be 3. Guys, tell me? No, sir. Yeah. So 2000 divided by 28, that is 500 by 7. So number of moles of H2 is coming as 214.28. Okay. This is the number of moles of H2 that has reacted. Now, number of moles of H2 unreacted. उसके लिए क्या करेंगे? टोटल माइनस रिएक्टेड. ठीक है? आपके पास 2 किलो चीनी थी, आपने 1 किलो चीनी यूज कर लिया, कितना किलो बचा? 1 किलो बचा, है ना? तो टोटल माइनस whatever has reacted, whatever you have used in the preparation of खीर, पूरी, जो भी बनाते हैं आप, है ना? The number of moles of H2 we have seen that total was how much? 500. उसको लिखेंगे total is equal to 500 divided by reacted कितना हो जाएगा? 214.28 is equal to कितना हो जाएगा? 250 में और कितना बचा? 6 के बाद और कितना बचा? 30, 36, 286, 285 point
100 में 28 कितना गया? 72 ग्राम। इसको कैलकुलेट कीजिएगा जरा। ऑल इफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है, ध्यान से कीजिए। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। हाँ, लेट मी रीड, लेट मी चेक। आप कीजिए आराम से, लेट मी चेक। Yes, you guys can. Problems. So it is right. ठीक है। I have just calculated the number of moles. You guys need to calculate the mass of H2 unreacted. You have the oh, it is not grams. My bad, guys. So not be grams. My bad. This is number of moles, so it will be mole. Okay. Now, mass of dihydrogen unreacted is equal to. So what we will do? 285.72 is the number of moles. I will multiply this number by what is the molar mass of H2? Tell me, guys, what is the molar mass of H2? No. किसी को नहीं याद? Molar mass of dihydrogen. Oh God, Sir, Jasleen. 18. How much, Sabiha? 18. H2. 2. Can you explain 1000, Sabiha? Sabiha, nahi, Shaima, sorry. Yes, Shaima, can you explain 1000? I've shown how it will be 500, by the way. Zainab, correct. So you will multiply this number, you will get the mass of dihydrogen that is unreacted. Guys, you need to remember ये 18 आंसर क्यों आ रहा है? H2 है, H2O का अलग होता है, water है. You guys need to memorize this. 1 to 20, at least 1 to 20 atomic numbers.
अगर आपको नहीं याद है, if you don't remember, then you have it in the notebook. Please flip your pages and then answer. ठीक है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कौन से पेज में है. If you don't know in which page the molar masses is present in your notebook, then you don't see your notebook. And that will tell that you are not a serious student. Yes, Shaima, I'm still waiting. How it is 1,000? Like, why are you saying 1,000? What happened? Can you not talk? Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Tell me. Yes, sir, I got it. I just confused. Okay. And hydrogen, the atom hydrogen, it has atomic mass, the molar mass as 1. The hydrogen molecule that we have, H2, that has a molar mass of 2. So that is why we have divided by 2, not by 1. Okay, Sabiha, if you calculate it even more correctly, you will get the answer as 72 ka double now. That's fine, correct. That's fine. Zainab, that also works. I think that is a bit of approximation. Okay, chali, moving on. I hope all of you got this answer and everything. No. Acha, I'm asking you guys, is there any doubt in the assignment? Please let me know. Zainab, correct. Let's do another question. Yeah, that is fine. See, whenever I say, regarding the values, approximations, and everything, I'm talking in terms of 12th board examination. Whether you will get marks or not, that is mainly depending on the teacher, on your class teacher. Okay. So the approximation that I'm talking about, Zainab, it's with respect to the board's level approximation, what they allow and how lenient they are. I really don't know about the schools. Schools में generally teacher नहीं अच्छे हो. They are like नहीं जो answer है accurate calculator की तरह लिखो. I think that is not really required. What you guys need to have right now is the sense of approximation कि लगभग इतना होगा. ठीक है? You should have that. The approximation should not be very far away. Yes, Shaima, correct. ठीक है. Shall we calculate this? So I will give you here the आपने लिखा है क्या phosphorus का molar mass लिखा है? phosphorus molar mass लिखा है ना? ठीक है. I think you have बाकी सबका तो लिखा है I guess. Phosphorus, the molar mass of phosphorus, it is 30.9. You can take it approximately as 40. 40 बोले 31. ठीक है, 31 लेके चलिएगा. First thing that you need to do is you need to calculate they are asking the amount of Ca3PO4 whole twice. Now, first of all, ये तो balance कीजिएगा आप. ठीक है. Now, since they are asking regarding only this particular product, then what you need to do, you need to calculate the molar mass of this part
You need to calculate the molar mass of CaCO3 and H3PO4 because you need to calculate the MCR of both of these things and then compare it. So first of all, whatever information has been given to you, उससे पहले कुछ molar mass वगैरह निकालना है तो वो सब निकाल के रखिए, ठीक है? And keep things in your notebook itself. Don't write it in the backside. Don't do any calculation in the backside. Do all the calculation in the same page where you are solving numerical. You will have plenty of space. If you're not having space, get a bit big copy. You can have some line like this and you can do all the rough works here. Okay? Don't do any rough work in the backside of the page because backside of your notebook, because right now your backside is, I think, quite vacant. But when we reach the last chapter of this textbook, that is equilibrium, then your backside will be completely filled if you have this habit of doing the calculation the backside. And then you cannot go back and see, okay, fine, what mistake I have done. It's very important to do the calculation in the same page. Yes, okay, fine, Shaima. And I think I got this information from some other students also. At 12th May, you guys are going to have first unit test. But only this chapter will be completed. Atomic structure will not be completed. So उसको थोड़ा आपको खुद से देख लीजिएगा. You will be provided with the recordings. You will have doubt class and everything. But obviously class में तो complete नहीं. ठीक है. तो ये जो है वो ना आपको साफ साफ बिल्कुल चीजें बता देना. मैं ऐसे कुछ आप लोगों को फेक प्रॉमिस नहीं कर नहीं हम सब करा देंगे, वो नहीं होगा. ठीक है. एटॉमिक स्ट्रक्चर उस टाइम तक नहीं हो पाएगा. The number of numericals I do in the class, you can understand why it takes time to complete the syllabus, at least for me. ये चैप्टर भी खत्म क्यों नहीं हुआ है? Because I make you guys do the problems. अभी हम इस प्रॉब्लम करेंगे तो आपसे आधा टाइम लगेगा वो. Okay, 2 more minutes. You will send me whatever you have done. नोटबुक के ही अगर आप प्रॉब्लम्स कर लेंगे ना तो आपका ठीक हो जाएगा. मतलब कोई भी चैप्टर ले लीजिए. If you do the questions that is only present in the notes twice at least, you will be okay with that chapter. फिर हम बता देंगे एक दो चीजें. Yes, please send me whatever you have done.
send me whatever you have done. ठीक है, you guys can keep doing the calculations once I'm looking at your answers. Send me whatever you have done till now. If you have not done anything, send me nothing. ठीक है, लेकिन हम जो चीज कह रहे हैं ना उसको कीजिए प्लीज, बात मानने की तरीके से स्टार्ट कीजिए। सर जी जी बताएं। वो H3PO4 का भी मोलर मास लेना है ना, मॉलिक्यूलर मास? हाँ, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तो एमसीआर निकलेगा। ओके सर। ओके, यू नीड टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। ठीक है, जैनब ने तो भाई कितना भेज रहे हैं जैनब, तो एक ही भेजा आपने। मोलर मास ऑफ CaCO3 तो आपके नोटबुक में है जैनब, नहीं है? हाँ जैनब, Sir, it is there, but I calculated कैलकुलेटेड। ओके some of ठीक है, practice. ये 989 लिखा है क्या आपने? अच्छा नहीं नहीं, ग्राम है ना, ठीक ठीक ठीक, ओके दैट्स फाइन, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। तो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। नंबर मोलर मास आ गया ना। Now, when you are calculating the MCR, ना, then you just need to compare the MCR of CaCO3 with H3PO4. ठीक है, क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। You can see the denominators will be quite, अच्छा by the way you need to balance this first of all, इक्वेशन बैलेंस कीजिए तभी कोएफिशिएंट भी आएगा। ठीक है, So I बैलेंस balanced. कर, यू बैलेंस्ड इट। Yeah, it's there. ठीक ठीक ठीक, हाँ आपने तो बैलेंस किया है, जी जी। लेट मी जस्ट सी द बैलेंसिंग। सी ए ठीक है, CO3 CO3 को हटाओ, बहुत जगह ऑक्सीजन है भाई। PO4 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 2 नेगेटिव, इधर 3, हाँ ठीक है। Sir, I'm not sure about CO2. Is it correct? You are not sure about CO2, is it correct? CO2 तो 3 कार्बन है, तो इधर 3 कार्बन होना चाहिए ना। CaCO3 3 है ना, तो you should have 3 there also, right? ऑक्सीजन देख लेते हैं फिर। 3 3 9, 4 8, 8 9 17, इधर कितना है, 4 8 8 6 3, हाँ ठीक है 17, ठीक हो जाएगा, 3 कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग, जसलीन, सबीहा, शाइमा, सेंड व्हाटएवर यू हैव डन। बड़ा टाइम लगाते हैं यार, PTM करा लेंगे हम आप लोग के पेरेंट्स साथ बैठ के बात करेंगे, भेजते क्यों नहीं है आप लोग आंसर? करते हैं एक दिन, PTM करते हैं। If you guys have done nothing, click a photo. हमने जैसे बोला ना, प्लीज सेंड मी द आंसर्स व्हाटएवर यू हैव डन। आपका पेन वहीं पे रुक जाना चाहिए, आप फोन लेके आते, क्लिक करते फोटो, और उसके बाद हमको भेजते, फोन रखते, पेन पकड़ते, चालू कर देते। बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू चेक मेनी पीपल्स का ना, हमको अभी सिर्फ जैनब ने भेजा, शाइमा का चेक करेंगे, सबिया का करेंगे। जैनब देखिए उन्होंने भेज दिया, वो आराम से लिख रही है, कर रही है अपना काम। जैनब ने भेजा ना, जैनब इज माई फेवरेट। पहले तो शाइमा थी, शाइमा ने लेकिन बहन का भी नाम खराब कर दिया। शाइमा, शाइमा भाई साहब, ये आप इसमें भेज रहे हैं, जूम पर, चैट में। फोन कहाँ गया, फोन नहीं है आपके पास? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, चलता है। इसलिए 3 2, ठीक है, 3, ठीक है, ठीक है सभी, आई हैव गॉट योर आंसर। W ऑफ CaCO3 15, W ऑफ S3 73 पॉइंट उसका नहीं दिख रहा है थोड़ा शाइमा, ठीक है ना, तो आगे शायद मिस्टेक हो सकता है। जैसे ही मास रहे ना, एक आप लोग को टिप दे दे रहे हैं, जैसे ही मास रहे वहीं पे मोलर मास एटलीस्ट फ्रैक्शन में कर दो। मोलर मास बोले नंबर ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन में कर लिया कीजिए, प्लीज डोंट सॉल्व टिल द डेसिमल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, कीप एवरीथिंग इन फ्रैक्शन।
until and unless you are at the last step. इस चीज को भाई दिमाग में बैठा लो ऐसे फ्रेज, और ऐसे करना सालिम हसन रजा क्या, डोंट सॉल्व फॉर डेसिमल until and unless it is the last step. ठीक है, डोंट सॉल्व फॉर डेसिमल until and unless it is the last step. सालिम हसन रजा ऐसे कोटेशन के साथ। सालिम सर, सालिम हसन रजा क्या होता है? ये देखो यहाँ पे देखिए, एक चीज सभी आपको हम ये कर रहे हैं ना, सभी, हाँ, कैन यू टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. ठीक है, 0.5 और 73.5 डिवाइड बाय 98, दीज आर द एमसीआर दैट यू हैव, नहीं नंबर ऑफ मोल्स मिला आपको ना अभी तो, Yes, sir. ठीक है ना, उसको ना 500 अपॉन 50 अपॉन 100 ही रखिए, काम आएगा कंपेयर करने में। अब देखिएगा, ठीक है, Okay, sir. बिकॉज यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स दोनों का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, कैन यू सी दैट सभी, हाँ, Yes, sir. है ना, तो कंपेयर करने में बाद में आसानी होगी। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अब ऐसा दिमाग आपका भी आ जाएगा, है ना, 11th क्लास सर पढ़ते अभी पढ़ते। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम करूँ नहीं तो ऐसे ही छोड़ दूँ? नहीं नहीं, अभी छोड़ दीजिए, सेम मत कीजिए, हर जगह सेम मत कीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द केस ना। अभी तो डिनोमिनेटर इज ऑलमोस्ट सेम, वी Yes, कैन sir. डू द कंपैरिजन, ठीक है, तो छोड़ देंगे, ठीक है। Okay, sir. ये अच्छा, इंपेरेटिव फॉर्मूला लास्ट भेजा था आपने शाइमा, नहीं साइमन ने तो भेज दिया, जैनब ने फिर से भेजा है, ओके। 100, 15 to 3, हाँ ये देखिए, नाउ यू कैन कंपेयर ना, हाँ ठीक है, सही, 100 है नीचे, 150 है उधर, 90, ओ नहीं, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ मतलब थोड़ा कांटे का टक्कर हो गया, है ना जैनब? Okay, we say it in English. ओ कैसे है, कांटे का टक्कर के क्या बोलेंगे भाई? I mean those values are very I mean they're very near to each other, but here both are small, here both are larger. You need to calculate in this case. Yes, So I you got cannot approach. You calculated everything. decimal for CSE3 I got it as 0.6 and the other one 1.5. 1.5 Yes, sir. MCR. Yes, sir. How? I mean, see, new MCR for S3PO4. You're talking about that. Yes, sir. It won't be 1.5 now, because 98 is smaller than 147. Numerator is smaller than denominator, so the value will be always less than 1. So I'll do it again and answer. You will get it as not 1.6, rather 0.6. Okay, and if you do 100 divided by 150, so it is like 1 by 3 only, na? Yes, sir. 1 by 3, that means it is 0.66667. तो भाई ऑलमोस्ट बराबर ही आ जा रहा है, किसी को भी लिमिटिंग रीजन ले लीजिए, आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी, देयर इज नो लिमिटिंग रीजन, हां सॉरी, व्हाट डिड यू से? Both of them I got it as same, that's why I got confused. हाँ दोनों सेम ही आ रहा है, हाँ तो I mean, you can use any one of them. Both of them are in their absolutely correct values, है ना? But wait a second. Let me just look at your calculation. कहीं calculations गलती ना हो जाए. CaCO3 में you have got the coefficient correct. Very good. For this also you have got the coefficient correctly. जी हाँ correctly. Very good. ठीक है. सर इसके बाद MCR निकालना है ना? जी हाँ, इसके बाद MCR निकालना है, वो हम करेंगे, है ना? इतना टाइम तो नहीं दे सकते. घर में कीजिए ये सारी चीजें, देख रहे हैं ना? अब जैसे यहां से तो हमने टेक ओवर कर लिया, अब इसके बाद तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं, दिमाग में चलना बन जाएगा, वो दिमाग ही ऐसा होता है इंसान का। हम एक चीज आप लोगों को पूछ रहे हैं, when you go anywhere new with your father, when you go anywhere new with your mom or dad, and आपको लेके जाए वो, आपको पता नहीं है कि आपको वापस अकेले आना है, इफ इट इज अ न्यू प्लेस, आप अकेले आ ही नहीं पाएंगे, इज दैट राइट? बिकॉज when you are with your mom and dad, you don't look anywhere,
जहां जा रहे हैं वहां चल रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं वहां चल रहे हैं, पीछे 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 पीछे। इट हैपेंस लाइक दैट, यस और नो? नहीं, नहीं होता है कभी। अच्छा, आप लोग तो पैदल कहाँ जाते होंगे, आप लोग तो गाड़ी में जाते होंगे ना, इसलिए कुछ नहीं पता आप लोगों को। सी एर सी एर डी क्या आप, ये लोग सर इज प्रेजेंट। उफ, 50 grams of CaCO3 is allowed to react with 73.5 grams। ठीक है, ये सारी चीजों तो छोड़ो, हटाओ। कुछ काम तो आप लोगों ने किया है, कुछ काम को हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज 3, दिस इज 2। पूरा ही लिखते हैं यार, क्या हम भी लेजीनेस दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन, 3 moles of CaCO3 reacts with 2 moles of H3PO4 to gives how many moles? 3 है ना, हाँ, तो 1 mole of calcium phosphate CA3PO4 whole twice प्लस H2 प्लस CO2। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ना, मतलब हम तो यहाँ पे बेईमानी कर सकते हैं, आप लोग ऐसा, नो देयर इज नो लिमिटिंग रीजन बाय द वे। मतलब बोथ ऑफ देम आर देयर इन देयर एक्यूरेट अमाउंट, दोनों का एमसीआर बराबर आ जा रहा है। एमसीआर ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू एमसीआर ऑफ H3PO4 आ जा रहा है। ठीक है, सो यू कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग देयर। तो यहाँ पे आई कैन राइट नथिंग। H2 के केस में कितना, आई थिंक 3H2O था और 3CO2 भी था। कुछ गलती होगा तो बताइएगा। आई थिंक वी डोंट, बाय द वे इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग दीज वैल्यूज। ठीक है, चलिए हटाइए खैर। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। क्या करना है अब, गिवन है, व्हाट इज गिवन, मास ऑफ CaCO3 कितना है, 50। सो आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 100। द गिवन मास ऑफ H3PO4 will be equal to how much, 73.5, and I can calculate the number of moles which will be equal to 73.5 divided by 98 आ रहा है ना इसका, 31, उसके Yes, बाद sir. 16 64 और क्या, 3 है ना, 8 3 9, यस 98। ठीक है, आई विल कैलकुलेट दी एमसीआर। एमसीआर कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 100 इंटू CaCO3 के बगल में 3 है, और यहाँ पे मास ऑफ एमसीआर, इसका एमसीआर क्या आ जाएगा, 73.5 डिवाइड बाई 98। इसके बगल में क्या है भाई, 2 है। ये भाई रुक जाओ, ये यार जैनब भाई, जैनब कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन, आप बदनाम कर दीजिएगा हमको। हाँ जैनब, Sir, there is a mistake. हाँ देयर इज अ मिस्टेक, मतलब सॉरी शायमा, एवरीवन रियली सॉरी। हम ऐसे आंख बंद करके जैनब जैनब पे विश्वास कर लिए। आज भी तबीयत ठीक नहीं है आपकी जैनब, Yes, sir. तबीयत ठीक नहीं है आपकी? Yes, sir. I'm not क्या, well. यू हैव अ हेडेक? No, sir. Fever. फीवर भी है आपको? क्यों, कहाँ That's रहते हैं, right. प्रयास में, रियाज में रहते हैं क्या? No, sir. I live at Kuwait. जी 11 73.5। आई एम रियली सॉरी साइम, आई थिंक यू आर राइट। डिवाइड बाई 98 इंटू 2 कितना होता है भाई, 100 में आप 200 में आपका 4 कम हो जाएगा तो 196 हो जाएगा ना। ठीक है, क्या कंपेयर कर सकते हैं, कैन वी कंपेयर दीज वैल्यूज, क्या ख्याल है? ला 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 ला, कर सकते हैं थोड़ा, हम कर सकते हैं, आप लोग शायद ना कर पाए। ठीक है, करते हैं कंपेयर। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई, पागल हो जाएंगे बच्चे, क्या कर रहे हैं सर आप, ये 1.5, 1.5 से कौन मल्टीप्लाई करता है, एंड ऑल्सो दिस बाई 1.5। ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका, कैन यू प्लीज टेल योर माइक ऑन, हम सिखाते हैं आप लोगों को 1.5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। 50 का आधा कितना, व्हाट्स द हाफ ऑफ 50? एक 25. सेकंड, ये एक सेकंड, माय बैड गाइस, ये भी 300 होगा ना, हम भी, ये बिल्कुल ही, उफ, बेकार, हम जैनब का देख लिया आंसर, मेरी ही गलती है। आई डिड नॉट लुक एट द फॉर्मूला दैट शी वाज यूजिंग। 300, हाँ ठीक है, चलिए यही करना, लेकिन व्हाट इज द हाफ ऑफ, व्हाट इज द हाफ ऑफ 50, व्हाट्स द हाफ ऑफ 50, बोलो, 25.
25, बस वो ऐड कर 25. दीजिए इसमें आप। हाँ, इसमें ऐड कर दीजिए 50 + 25 कितना होगा? ठीक है, ठीक है। अब 300 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा बताइए जरा। 300 इंटू 1.5 कितना होगा? 450. 450। देखिए कितना तेज हो गया आप लोग, है कि नहीं? 450। एंड हियर व्हाट डू वी हैव? 73.5 divided by 196. Now you can see that the numerators are comparable, almost same है. But if you look at the denominators, MCR of MCR of CaCO3 की अगर आप बात करें, then the MCR of CaCO3 will be much less than that of MCR of what? H3PO4. Is that understandable? Yes or no? Please tell me. Now we can compare, na? These values are almost equal. So if the denominator is high, MCR will be low. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. I think Shaima was correct. G Shaima, very good. अब सीधे CaCO3 is a yes or no, guys. लिखने में लिख रहे होंगे ये लोग, तभी तो माइक ऑफ है. Comparing the MCR, we can say that MCR में understood this? Yes or no? Yes or no तो बोलो भाई. जसलीन, सबिहा, शाइमा, ज़ैनब. Yes, sir. Okay, thank you. CaCO3 क्या था यार? हाँ, लेस देन H3PO4. ठीक है, अभी तो सवाल खत्म नहीं हुआ, एमसीआर ही निकला है अभी. ठीक है, एमसीआर हो गया. CA3PO4 होल ट्वाइस इन मोल्स दे आर आस्किंग, तो उसका नंबर ऑफ मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं है. अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट इन मोल्स, ठीक है, वो सब चीज बाद में देख लेते हैं. अभी देख लेते हैं इनको, क्या ख्याल है? हाँ, देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, CA3PO4 होल थ्राइस, इसका कैलकुलेशन करते हैं. व्हाट वी राइट? MCR of CaCO3 is equal to MCR of CA3PO4 whole thrice. MCR of CaCO3 will be equal to how much? It will be equal to, ये मत ले लीजिएगा, ये बड़ा वाला वैल्यू 550/300 लीजिए, है ना? 50/300 which is equal to MCR of CaCO3, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका, ठीक है, of CA3PO4 whole thrice, जो कुछ भी है, डिवाइड बाई द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नंबर ऑफ मोल्स में निकालना. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका? 1 है, तो मजा ही आ गया. मजा नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CA3PO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू इतना ही, जितना क्या है आपके पास. 3 मोल में 1 मोल देता है, जितना मोल है आपके पास उससे क्या देगा? 1 मोल देगा, है ना? सब कुछ तो सही किया ना? हाँ, तो अरे ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई कितना? 1/6. सही है? बोलो भाई. अरे बोलते ही नहीं बच्चे यार. ठीक है, 1/6 कितना हो जाएगा? 0.16. वेरी गुड. इज इक्वल टू 0.1667 कर ली. 66 जाता रहेगा ना volts. कितना आसान हो गया सवाल. ठीक है, सेकेंड इज अनरिएक्टेड H3PO4. अनरिएक्टेड तो नहीं निकलेगा, रिएक्टेड निकलेगा हमारे से, फिर उसके बाद माइनस करेंगे टोटल से, तो अनरिएक्टेड हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो रिएक्टेड H3PO4 निकालना है. क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू MCR ऑफ, लिखते हैं पूरा ही, लिखते हैं MCR ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू MCR ऑफ H3PO4. कौन सा वाला? H3PO4. कौन सा वाला? रिएक्टेड वाला, है ना? प्लीज रिमेंबर दिस, रिएक्टेड H3PO4.
Now MCR of CaCO3, we have got this as 50 upon 300. It will be equal to number of moles of H3PO4. H3PO4 divided by, what was the stoichiometric coefficient? 3. So this will be equal to what? Number of moles of H3PO4 that is reacted will be equal to 100 upon 3. 100. So ये क्या हो जाएगा? 1 by 3. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Okay, so this is the number of moles that is reacted. Unreacted total minus One is reacted. reacted. Very good. Total कितना था हमारे पास? बस somewhere 73 upon 196 ना? नहीं, तो MCR था 73.5 divided by 98. This was the number of moles that we had total. सही है? टोटल था हमारे पास 73.5 divided by 98 minus 1 by 3. अब इसमें देख लीजिए कैसे ज्यादा सही रहेगा आपके लिए. करते हैं ना, क्या दिक्कत है? 5 is a 15, 6 is a 9 और 10, 10 is a 21, 21 और एक 22. ठीक है, माइनस 98 होगा यहाँ पे. 8 3 से 24 का 4, इधर 27, 20, 29. ठीक है, हियर आई विल प्लग इन पॉइंट हियर. 220 में आप 100 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 120. 120 में आप 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 118. 118 में आप और 0.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 117.5 डिवाइड बाई 294. This is also correct. 73.5 into 3. 220.5 ये भी सही है. 122.5 ये 122 होगा ये. This is not right. ये सूत्र कहाँ से कर दिया था हमने? 2 ऐड करना था ना, 100 हमने घटाया था तो 2 हमने माइनस कर दिया. 122.5 तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ये तो. डिवाइड बाई 294. दिस इज कमिंग एज 0.416666 करके आ रहा है, तो 67 कर दीजिए. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज अनरिएक्टेड. कॉपी कीजिए जहां तक हुआ है. व्हाट आर द आंसर्स वी हैव गॉट? 0.416 और 16667. लेट मी चेक द आंसर्स. आंसर सही है. फ्रैक्शन 1/6 5/12. ठीक है. Raise your hand once you're done copying. Sabiha and Shama waiting for you guys. I think everyone is done. है ना? ठीक है. चलिए अब एक अगले किस्म का सवाल ले रहे हैं हम लोग.
0.5 mole of H2SO4 is mixed with 0.2 mole of CaOH whole twice. ठीक है. Maximum number of moles of CaSO4 formed. What is the maximum number of moles of CaSO4 that is going to be formed? First of all, we need to write the equation here. ठीक है, I'm solving this. H2SO4 plus calcium hydroxide. ठीक, I hope you can identify this is hydroxide of a non-metal, तो base होगा. This is hydroxide of a what? Metal. तो ये sorry, hydroxide of a non-metal तो acid होगा, hydroxide of a metal तो ये क्या होगा? Base होगा. So acid base reaction will take place. वही यहाँ पे this is positive, ये negative. मीन ये यहाँ पे क्या है? Positive negative, ये उधर चल जाएगा. ठीक है. So what you are going to have is CaSO4, कैल्शियम को सल्फेट मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, एंड इफ यू सी फ्रॉम हियर H2 और OH है. ठीक है, वाटर बन जाएगा. ठीक, ध्यान से देखिए जरा. नाउ प्लीज सी, हियर वी नीड टू बैलेंस इट. H2 आपके पास यहाँ पे होना चाहिए कितना? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 4. यहाँ पे 2 होना चाहिए तो 4 हो जाएगा. CA is fine, SO4 is fine. Can you see the hydrogen balance? No, प्लीज देख लीजिए एक बार. इस बैलेंस yes or no, प्लीज टेल मी. करेक्ट है? बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है, ये बहुत आसान सवाल हो गया. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट और उसी से समझ में आ जाएगा हम लोग कि कौन सा लिमिटिंग रेजिएंट है, कौन सा नहीं. ठीक है. 1 mole of H2SO4 reacts with 1 mole of CaOH whole twice gives 1 mole of CaSO4. 1 mole of H2SO4 needs 1 mole of CaOH whole twice and it will give 1 mole of CaSO4. ठीक है, तो 1:1 एंड 1:1 का क्या है? रेशियो यहाँ पे बन रहा है रिगार्डिंग मोल्स. दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द, this is according to the reaction. So I'm talking about what? I'm talking about reaction. The reality, what is given to us, given is 0.5 mole of H2SO4. How many moles of calcium hydroxide? 0.2. अब यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 0.1 के लिए 1 चाहिए, तो 0.5 के लिए कितना चाहिए? How many moles is required for 0.5? Required 0.5. 0.5. 0.5. Yes. So why I will write here calcium hydroxide is less than needed. Correct है ना? Is less than needed. Therefore, it is limiting reagent. And we know that according to the limiting reagent, we are going to form the product. The product is formed according to ये लिखा है कि नहीं लिखा है हमने? ये पॉइंट नहीं लिखा है. ठीक है, बट आई होप ये आइडिया आपको था कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग. ठीक है ना? तो यू कैन सी दैट ऐसे अब चलते हैं. अब इसको इग्नोर कर दिए. H2SO4 काम का ही नहीं रहा हमारे पास. If they're going to ask what is the unreacted amount of H2SO4, then we will talk about it. Otherwise, no. With regard to the product, the formation product, the amount of product, it's not required. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? 0.2 moles will give how many moles of CaSO4? Tell me guys. एक से एक मिलता है. 0.2 से कितना मिलेगा? How much are we going to get in 0.2 moles of CaOH whole twice? 0.2. 0. Option number A. Option 9. ठीक है. Yes, sir. I hope you have copied this down. Yes or no?
Cancer. है ना, ये देखिए if 1.5 moles of oxygen combined with aluminium to form Al2O3, the weight of aluminium used in this reaction. Used का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना लिया है, used का मतलब है reaction में how much it has been reacted. ठीक है? So first of all, I will have to write the reaction. We have aluminium, and they are saying that you react with oxygen. तो oxygen को O मत लीजिएगा, because oxygen it is what it is present in the universe in the form of what O2. ये हमेशा O2 में ही मिलेगा आपको. And what you are going to get? You are going to get Al2O3. Al2O3. ठीक है? अच्छा, Al2O3 हो गया. Then you are going to balance it. Balance करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 एल्यूमिनियम. और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? वो नहीं, यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले नहीं कर देंगे, पहले ऑक्सीजन को करते हैं. ऑक्सीजन विल बी 2 हियर, 3 to the 6 हो जाएगा. और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड यहाँ पे आपके पास 4 एल्यूमिनियम आ जाएगा. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. सबको समझ में आया? यस और नो प्लीज टेल मी. तो भाई बैलेंसिंग समझ में नहीं आया वो समझ लीजिएगा, 10th क्लास तो आप लोगों ने पढ़ के आया ना, ठीक है, तो थोड़ा तो वहां से समझ सकते हैं. दिक्कत होगी तो बैलेंसिंग में आई हूँ, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं. ठीक है, 4 एल्यूमिनियम. नाउ अब यहाँ पे मोल्स से ही खेल लेते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन अस मोल्स. आई विल राइट 4 moles requires 3 moles of O2. अब इसको छोड़ दीजिए Al2O3 को, ठीक है, इसी पे खेलते हैं हम लोग, बिकॉज दे आर ओनली आस्किंग रिगार्डिंग द रिएक्टेंट्स. सो 4 moles रिक्वायर 3 moles of O2. क्या ख्याल है गाइस? करेक्ट है ना? अरे बोलो भाई. Correct, sir. मेक सेंस एवरीवन? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. 4 moles of aluminium needs 3 moles of O2. 4 moles of aluminium needs 3 moles of O2. Yeah, we can see 3 moles of O2 needs 4 moles of aluminium. What has been given? This is the reaction. Given क्या आपके पास 1.5. 3 से 1.5 में देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम दैट वी रिक्वायर? 2 moles, है ना? देखिए कितना बढ़िया है भाई, चॉकलेट लेने के जैसा है ये तो, बिल्कुल है कि नहीं? यूनिटरी मेथड 2. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज मोल्स. व्हाट इज दिस? दिस इज मोल्स बाय द वे, है ना? वी नीड टू गो टू व्हाट? मास. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास. मोलर मास पता है किसी को? किस बच्चे को पता है मोलर मास? किसी को नहीं पता? 27. कितना हो जाएगा डबल करेंगे तो? 54 ग्राम्स. ऑप्शन नंबर सी. क्या ख्याल है गाइस? आसान है ना? Yes, sir. जी. आज तो इतना क्वेश्चन कराएंगे आप लोग, तो इतना क्वेश्चन कराएंगे आप लोग. अगला सवाल है. कैन यू गाइस डू दिस ऑन योर ओन? मोल्स मोल्स में खेलना है आपको. And then like when you have to convert to liters, you know we have just did this thing in the past class, how to go from नहीं ये तो बहुत पहले कराया था हमने, how to go from moles to liters at STP. ठीक है, छापिए इस सवाल को, कीजिए जरा. रिएक्शन रिएक्शन सब कुछ दिया हुआ, आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी शायद. Na2 कार्बन 1 कार्बन 1 O3 7, यहाँ भी 7. अरे सही है, लगता है बैलेंस नहीं लग रहा है. रिएक्शन तो देख लीजिए जरा एक बार. Okay, I will wait 5 seconds. I'm going to wait, and then I'm going to explain one thing in this particular question that may do what, that you may not understand, या फिर that may be working as a barrier. ये तो अक्सर आप ये क्या होता है. ठीक है, चलिए. I hope you have written this down. Now please see this question and listen to me very carefully. How many liters of CO2 at STP will be formed when 0.01 mole of H2SO4 reacts with excess of Na2CO3? क्या मतलब इसका सर, excess of Na2CO3? इसका ये मतलब है कि जो amount of Na2CO3 required for reaction के लिए with 0.1 mole of H2SO4 उससे कई ज्यादा आपने लिया. That means if I have taken more, if Na2CO3 is what more than needed, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट दूसरा वाला हो जाएगा.
H2SO4. ठीक है? So here whatever calculation you are going to do is going to be with respect to H2SO4. ठीक है? Excess of Na2CO3 का मतलब that is not limiting reagent. We are going to calculate the amount of product according to the other reactant that has been given, जिसका amount आपको दिया हुआ है ना? And this will come under the category 1 when you have been given the amount of one of the reactants जैसे कि H2SO4. ये बहुत समझा दिया मैं, करो अब. Okay, Shaima, can you please send me the answer how you have done it? Shaima, I'm waiting for your answer. I've got your answer, by the way. I'm waiting for the WhatsApp answer. What about others? भाई किसको दिक्कत हो रही है? Raise your hand. If you guys are having any difficulty, काम करते हैं. Giving you guys 1 minute. Please send me whatever you have done. अरे भाई भेज तो दो आंसर्स. क्या हो गया?
भेज दीजिए, आंसर भेज दीजिए। इस बार हम नहीं बहकेंगे, ठीक है? आई विल नॉट एक्सेप्ट योर आंसर। हम उसको अच्छे से जांच पड़ताल, हिंदी आपको नहीं आती शायद। आई विल look very deeply into it, है ना? I will see each and every line. I will see each and every dash. Shaima has sent the answer. इसमें एमसीआर वैसे करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ऐसे हो जाता ना। 1 1 1, ठीक है, बिल्कुल सही खेला आपने। बहुत बढ़िया, सही, वेरी गुड। इतने आसानी से आंसर आ गया ना। जैनब हैज सेंट। यूनिट नहीं है जैनब, बाकी सब सही है आई थिंक। 0.2। थोड़ा आपने खेला सही से नहीं, ठीक है? Reactions are so like the way you have to play with the reaction and the amount, you don't do it very well, but it's fine. I understand that. You're only concerned with the H2SO4 and you're only concerned with CO2. You're not concerned about anything else. I hope one mole of it. ठीक है, okay, 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 okay. Liters. Liters is the only remaining part. जी हाँ जी, आप सही है। What about others? Jasleen, Sabiha. Jasleen and Sabiha. ठीक, बाकी आप लोग अगला सवाल कीजिए फिर। Those who are done with this. जस्ट कुछ बोलिएगा कि बोलिएगा भी नहीं आप लोग? Jasleen and Sabiha, tell me guys. Will you speak or you are not going to speak? I'm kind of stuck. Why you are stuck? Tell me. क्या तो भेजिए, तो क्या किया आपने? कुछ नहीं किया है। Did not do anything. From the previous questions, you have to, I mean, have some insight ना, कि जो दिया उसको लिख रहे हैं, फिर उस पर then I'm comparing what is given. वो करना था। Sabiha, what about you? जी जसलीन प्लीज सर, सेट में। जी बताइए क्या हुआ? मैं कर रही हूँ। क्या भेजिए ना, जो किया आपने प्लीज भेजिए यार, इतना टाइम नहीं लगाया करते हैं। हम बंद कर देंगे ये चीज करना, आप लोगों से आंसर मांगना। हम आएंगे, सवाल लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सवाल लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ डिस्कस नहीं करेंगे फिर। अब इस तरह ये समझ में नहीं आएगा, वो हम समझा देंगे। हाँ सर, आप समझा सकते हो वापस। क्या समझाएं बताइए इसमें? माइक ऑन करें आप। कीप योर माइक ऑन। इसमें भी टाइम लग रहा है आप लोग को, हर चीज में तो टाइम ही लगता है। जी हाँ, रीड द रिएक्शन क्या है? Na2CO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus CO2 plus H2। हमको लिखने भी, लिखना भी है, ऐसे ऐसे पढ़िए जैसे हम लिख रहे हैं। चलिए हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर से। Na2CO3 Na2CO3 plus H2SO4 plus H2SO4 gives Na2SO4 Na2SO4 plus CO2 plus CO2 plus H2O। plus H2। First question, is it balanced? नहीं सर, नहीं सर, it's not, no, it's not balanced। नॉट बैलेंस, बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस की बताइए, विच आइटम इज नॉट बैलेंस? कीप योर माइक ऑन, कीप योर माइक ऑन। सभी हाँ, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कीजिए। सोडियम कितना है रिएक्शन में, प्रोडक्ट में, कंपेयर करके बताइए। सेम है, 2 2। कार्बन? और कार्बन भी सेम है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत जगह है, छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, है ना? हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन भी सेम है सर। सल्फर? सल्फर भी सेम है सर, बस ऑक्सीजन ही है। अलग है ऑक्सीजन, बताइए कितना है रिएक्शन में? यस जस्टिन, वेरी गुड, करेक्ट। हाउ मेनी ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट? ऐसे Na2CO3 में हाउ मेनी? सभी ये ऐसे नहीं, एक पार्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है सभी आप? हाउ मेनी ऑक्सीजन इन Na2CO3? इसमें कितना है? 3 3। ठीक, इसमें कितना है?
4 टोटल कितना हो गया? 7 7. हाउ मेनी ऑप्शंस अच्छा हियर? सारा मिला के पूछ रहे थे। ओके ओके अच्छा रिएक्टेंट में 8 है 7 है प्रोडक्ट में भी 7 है। अच्छा सॉरी सर क्या सॉरी? वो मुझे लगा था कि अनबैलेंस्ड है। अरे छोड़ो, मतलब हमको सॉरी क्या करना है, वो आपको ना वे सिखाना है ना हमको। सॉरी बोलने से क्या हो, समझ गया आप कैसे करना है ये, सो नो टेल मी। जी हाँ जी ठीक है, सर। पूरे देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, डोंट लुक एट दी ओवरऑल थिंग्स कहीं पे भी। ठीक है, पूरे रिएक्शन, अभी जैसे ना कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप पढ़ते होंगे ना, तो शायद ये मतलब हमारे अंदर कमी रहती है टीचर्स के अंदर, बिकॉज वी हैव अ एक्सपीरियंस, तो हम ओवरऑल रिएक्शन को देख के थोड़ा आंसर दे देते हैं। सो व्हाट स्टूडेंट्स थिंक इज दैट कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, बट वो ना हमारे पास प्रैक्टिस कैसे हुई है, हम लोग पहले एक एक रिएक्शन को देखते थे। नाउ वी हैव सीन सो मेनी रिएक्शंस दैट वी कैन सम इन सम केसेस लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन, एक दो चीजों को देख के मतलब वी हैव अ गेस दैट यू कैन नॉट डू राइट। आपको कैसे एक एक को देख के चलना समझ में आ गया ये, सुनो सभी, हाँ? जी सर। ठीक है, चलिए। नाउ इफ इट इज बैलेंस देन आई कैन से दैट, अच्छा, इन इट व्हाट हैज बीन गिवन टू अस, व्हाट हैज बीन आस्क्ड अस, उसी पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। वी हैव बीन गिवन अबाउट 0.01 moles of H2SO4 and regarding Na2SO4. So I will write according to the reaction. ये लिख सकते हैं because this is something that we are writing in the previous question also. Yes or no? यस सर। रिएक्शन में H2SO4 को फोकस करेंगे, 1 मोल। जी Na2SO4 कितना देगा? 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव 1 मोल ऑफ Na2। क्या लिख दिया है हमने? ठीक लिखा है ना? हाँ ठीक लिखा है, ठीक है, सॉरी, Na2CO3 यहाँ पे ना, ठीक है, ओके। इट गिव्स 1 मोल ऑफ Na2SO4, सही है। जी सर। अब हम लोग गिवन लिखते हैं, याद आया? जी सर। व्हाट इज गिवन H2SO4 में, बताइए क्या लिखें? 0.0। तो भाई तो गिवन है, क्या हो गया सभी? हाँ, पिछले पिछले क्वेश्चन आपने आंख बंद करके किया था क्या? कुछ सुना नहीं था व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग? नहीं सर सुना। फिर अब यहाँ पे देख, Na2SO4 कितना होगा? 1 मोल ऑफ H2SO4। अरे यार सभी, हाँ, 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स हाउ मेनी मोल ऑफ Na2SO4? 1 मोल से वन कितना मिलेगा? 1। 2 मोल वन। से, ठीक है, 2 मोल से, यस सर। 2 मोल से कितना मिलेगा? हाउ मेनी यू विल गेट इन 2 मोल्स? ठीक है, आसान करते हैं, एक आदमी के लिए एक बिरयानी, 2 आदमी के लिए, कीप योर माइक ऑन, आसान करते हैं ना आपके लैंग्वेज में जी। एक आदमी के लिए एक बिरयानी, 2 आदमी के लिए, 2 बिरयानी। 3 आदमी के लिए, 3 बिरयानी। 0.1 आदमी के लिए। 0.02 बिरयानी। क्या है 0.02 भाई? सर बट अच्छा नहीं नहीं नहीं, 8 क्लास के बच्चे की तरह सोचिए, 8 क्लास के बच्चे की तरह सॉरी सोचिए सॉरी प्लीज। सॉरी सर सॉरी 0.01 ही। ठीक है, ये ना भाई 8 क्लास के बच्चे की तरह सोचो यार प्लीज, ठीक है ना? 9 10 भी भूल जाइए आप, हम तो ये बोले। अब आई होप यू कैन एग्री विथ मी कि यहाँ पे सिर्फ कमोडिटी चेंज हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वट एवर यू यूज टू टॉक अबाउट इन 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन होते थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ऐसा बड़ा बड़ा अच्छा कंपाउंड दिख रहा है, H2SO4, Na2CO3, Na2SO4, CO2H2O। यू एग्री विथ मी दिस, एग्री विथ दिस राइट सभी? है सुनो, यस सर। वो मतलब जो कंसेप्ट है वो तो सेम है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ऐसे अपने आप को थोड़ा सा डम डाउन करके करेंगे कि 8 क्लास के बच्चे की तरह सोचते हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे कहीं आपको ना ऐसा नहीं ट्रिकी कर देंगे हम कुछ, ठीक है? जहां भी ट्रिकी होगा ना, वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आपको पता चलेगा ट्रिकी, वो भी हम बता देंगे कहां पे ट्रिकी हो रहा है। All if you agree with this, yes or no, tell me, Jasleen. It is like 8th standard only, 8th standard maths, but commodities are different. क्या ख्याल है? Yes, Jasleen, tell me. Yes, sir. Zainab, you agree with this?
Yes, sir. व्हाट अबाउट शाइमा? यस, ठीक है। तो इसी को वैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, हल्का हल्का लेके चलते, बहुत दिल पे मत लेके चलिए। बहुत ज्यादा थिंक करेंगे तब जाके दिक्कत होती है। अब देखिए, वी विल गेट 0.01 मोल ऑफ Na2CO Na2SO4. Now we have to do what? We have got moles, we have to find what? Volume. So for volume, what we need to do? Volume will be equal to the number of moles multiplied by molar volume at STP. Moles कितना है? 0.01. Molar volume, this is something that you need to memorize, that is 22.4, which will be equal to 0. 2 decimal point ना 224 liters, which is option number C. ये किया किसी ने? अगला वाला, for reaction 2P plus Q, nobody has done this. Sir, I've sent uh, it to you. Shaima, you sent it to me. हाँ ठीक है, ठीक, ओके। नंबर नहीं दिया ना हमने क्वेश्चन को, इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा सही से, ठीक है। अच्छा, चलिए अगला सवाल। बात ये बाकी लोग करें प्लीज, जल्दी करें, ठीक है। जिन लोगों ने इसको कर लिया है नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ से हम नंबरिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो बहुत ज्यादा हो गए, चलिए देख ही लेते हैं हम कितने क्वेश्चन हो गए। Sir, बताइए, हाउ मेनी uh, क्वेश्चंस? the previous question, right? I had to हाँ, multiply with 22.4. Rather, I can multiply it with 22.7 also. आपको अपने, ठीक है, 22.4 इज द वैल्यू जो नीट भी लेके चल रहा है, जो जेई भी लेके चल रहा है, ठीक है। सो बट एनसीईआरटी में आई हैव सीन एनसीईआरटी इज यूजिंग 22.7 समटाइम्स, है ना, इन द रिएक्शंस होल थिंग। Yes, सो sir. ठीक है, तो बेसिकली आप टीचर से अभी पूछ लीजिए, बट अदरवाइज जेई नीट में तो आपको 22.4 लेके चलना है, बिकॉज और द प्रीवियस वैल्यूज, जो पुराना डेटा है, जो पुराने क्वेश्चन सारे 22.4 पे ही बने हुए हैं, ठीक है। सो ऑन जस्ट दैट आई एम सेइंग कि आप क्या यूज करें, 22.4 यूज करें। तो उसके बाद और जैसे ये वाला आंसर भी है ना, जैसे ये भी आंसर 22.4 के लिए था, देखिए 22.7 का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। 4 5, है ना, यू कैन सी दैट। Yes, sir. ये 6 हो गया, ठीक है। ठीक, अनदर क्वेश्चन। हम वैसे तो पागल करने वाला सवाल देते हैं आप लोग, है ना, आसान तो काफी काफी हो गया है। 6 वाला का आंसर भेजिए भाई, बहुत आसान है 6 वाला तो। क्वेश्चन नंबर 7 इज हार्ड। हार्ड तो नहीं है, मतलब लैंग्वेज ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा अजीब लगे। Okay, Jasleen and Sama, you guys are getting the same answer. Let me just see. I have not seen this question by the way. For reaction, Zainab का भी वही आ रहा है। 2P plus Q gives R 8 mole of P and excess of Q. तो Q हटा दो।
हाँ बहुत सही, वेरी गुड, करेक्ट। सभी है, इसमें भी वही करना है आपको, ठीक है ना, रिएक्शन के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि रिएक्शन में 0.01 क्यों नहीं ले रखे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, बट रिएक्शन में यू हैव टू सी द stoichiometric coefficient of each of these things. H2SO4 का whatever stoichiometric coefficient is there, you have to write that. Na2SO4 में whatever stoichiometric coefficient is there, that you have to write. Given में whatever amount is given, वो लिखिएगा आप, and then you will have to do the stoichiometric. ठीक है, 1 से 0.01 होती है, यहाँ भी 1 से 0.01 होगा। अगर यहाँ पे 2 और 2, 1 और 1 है, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे रहता है 2.75, तो 1 से 2.75 है, ये भी 1 से क्या होता है, 2.75 भी होता। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप है आपको। इस डायलॉग में क्या लिखा है? अच्छा अच्छा ठीक है, डायलॉग भेज दिया था आपने, सॉरी सॉरी। सभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर बाय द वे, बाकी लोग ये 7th नंबर सॉल्व करें। सभी आप जब तक हमको ना आंसर ऐसे रिएक्शन लिखिए, गिवन लिखिए, सॉरी राइट द इक्वेशन, देन यहाँ पे रिएक्शन लिखिएगा, यहाँ पे गिवन लिखिएगा, यू विल गेट द आंसर, जल्दी लिखिए, आ जाएगा आंसर। 7th वाले के लिए तो हम आप लोग को दे रहे हैं 2 minutes, because you don't need to do any calculations by the way. When X grams of carbon are heated with Y grams of oxygen in a closed vessel, no solid residue is left behind. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? And this is what? Okay. Saima, can you show me your work? What, like how you got this answer? Minutes are over. Can you just Sabiha, ठीक है, thanks sir. Sabiha, what about you? You got the answer for the 6th question, Sabiha? यार सभी माइक ऑन कर लेना जल्दी से। फिर बताइए ना, नहीं तो फिर से कराएंगे ना आपको सवाल, जल्दी तो बोलिए, टाइम नहीं है करिए। Sir, 4 more. एक तो सुनो, ध्यान से बात सुनो, जोर से बोलो। अरे भाई हम तुमको तो मार भी नहीं सकते, मार सकते क्या तुमको हम? सभी हाँ टेल मी। अच्छा हम आ जाएंगे क्या, जून से बाहर निकल जाएंगे हम? हाँ सभी हाँ। कुछ भूल ही नहीं है। सही आंसर है आपका, 4 मोल ऑफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो कर लीजिए माइक ऑन। जी sir. आप डांटेंगे, गलत आंसर था आपका, देखा धोखा दे दिया हमने आपको, रुको कहाँ भाग रहे हैं आप, नहीं सही सही था, चिल करो सही था, मजाक करते हैं। ठीक है, ये कीजिए। चलिए ठीक है, इसके लिए तो टाइम दे दिया था, बाकी तो हमने, अभी ये सुन लीजिए जरा।
ठीक है, यू कैन टर्न योर माइक ऑफ सभी। हाँ, हार्ट अटैक आ गया होगा सभी आपको। When X grams of carbon are heated with Y grams of oxygen in a closed vessel, no solid residue is left behind. Which of the following statement is correct? देखते हैं यहाँ पे। अब ये सर क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हमको तो समझ नहीं आ रहा है। कार्बन कुछ नहीं हो रहा है। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको? CO2 देगा। सही है, CO2। बैलेंस करें? हाँ करते हैं बैलेंस। ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग। आपका देखिए, अगर हम गिवन की बात करें, गिवन छोड़ देते हैं, x ग्राम से, तो मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोड़, ये सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। गिवन की सीधा बात करते हैं, तो कार्बन इट इज इक्वल टू x ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा कार्बन का? x अपॉन 12 इज हीटेड विद y ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है भाई, तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू y ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? y अपॉन O2 का मास कितना हो जाएगा? 32। यहां तक मेक सेंस? कैसा? नो प्लीज टेल मी, बोलो भाई। जसलीन, सबिहा, शाइमा, जैनब, Yes, sir. करेक्ट ना? Yes, अब उसके sir. बाद क्या करेंगे? एमसीआर। वेरी गुड, एमसीआर क्या होता है? एमसीआर इसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? x अपॉन 12 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1, 1 से डिवाइड कीजिए, इट विल बी सेम थिंग। हियर आल्सो एमसीआर विल बी इक्वल टू हाउ मच? ठीक है देखो, जस्टिन, इफ यू हैव एनी वर्क कैन यू प्लीज शो इट टू मी। एमसीआर विल बी इक्वल टू हाउ मच? y अपॉन 32। बात समझ में Right. यहां तक? yes or no please tell me, Yes, sir. or if you got this, yes or no? ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, हेलो नाइला, एम आई ऑडिबल? Yeah, you're audible. नाइला, you have a demo class, trial class, right? Yeah. Okay, we'll just start, okay? Just give me a minute. Were you not informed regarding any, were you not given any update regarding this? The timings? Actually, the net is weak here, so I didn't get the message. Just right a few minutes ago, I'm getting it. So I'm really sorry for being late. You got the message 5 minutes before. What was the message? Sorry. What was the message regarding? No, the class, today's class, the chemistry class. Fine. Actually, I changed the timing. Fine, ठीक है. You are here, then we can talk. But give me a mic, okay? Let me just solve this. And then we'll talk. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए. We have MCR of Cu carbon and the MCR of O2, right? And we have what? CO2. ठीक है. अच्छा, if both of these things are completely reacted, if both of these things are completely reacted, मैंने पूछा क्या वैसे? Which of the following is correct? We can say that MCR of carbon is equal to MCR of oxygen. MCR of carbon is equal to how much? X by 12, which will be equal to Y by 32. Now they are asking y by x in all the cases. Okay. I will do y by x. 32 will go that side. 32 divided by 12, it is equal to y divided by x. Can you calculate this value? What is this value? 32 by 12. 2.6. 2.67. Now let us see the answer. Y by x must be greater than or equal to 2.67. Y by x must lie between 1.3 or 2.67. Y by x must be less than or equal to 1.33. Y by x must be greater than or equal to.
B option correct one. Now, how I have written, first of all, is this value that I'm talking about now. In this case, it is saying that in this case, MCR of carbon is equal to MCR of oxygen. Why I am saying MCR of carbon is equal to MCR of oxygen? Because the question is saying no solid residue is left. We know that carbon is the only one which is going to be solid, right? And oxygen is what? Oxygen is gas. Then they are saying that all the carbon has reacted. No solid residue is left. That means what? All the carbon has done what? All the carbon has already reacted. Now, this is only possible. This is only possible when carbon is limiting reagent. That makes sense, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Sir. Carbon is the limiting reagent. Now, if the carbon is limiting reagent, then what's going to happen? X by 12 will be less than Y by 32. That also makes sense, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, I am going to make these values a bit near to each other. Okay. But I cannot make it completely near to each other. But still, X by 12 should be what? Less than Y by 30. Then only the carbon is going to be limiting reagent. Now, from here, I can say that X, or rather Y by X, Y by X will be, you have learned inequalities, tell me now. Have you guys learned inequalities? Like equal to में तो आपको पता है कि y इधर जाता है x इधर जाता है, but एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? Just see here, guys. Let's suppose 1 by 4 it is greater than 1 by 4, 2 by 4. 2 by 4 it is greater than 1 by 4. This equation is valid, yes or no? Yes, sir. करेक्ट है. अब यहाँ पे अगर हम ये करें 4 को उधर भेज देते हैं, so 2 is greater than 1. This is also valid. Make sense? Yes, Got this? sir. Yes or no? Please tell me. So the thing that we used to do in equality, we can do it also in what? Inequalities also. There are some cases in which it changes, but उसको अभी रहने देते हैं. Okay. So what I can say, I'm sending X this side. 32 divided by 12 will be smaller than Y by X. Now make sense? So I can write that 2.67 will be less than X Y by X, or we can say that Y by X will be greater than 2.67. Okay. So B answer will be correct. Y by X must be greater than or equal to 2.67. Now, if they give you some kind of information now that we have taken this reaction, carbon plus O2 gives to CO2. This is when a complete combustion happens. I hope you remember this from the 10th standard. Complete combustion, incomplete combustion, right? So in this case, what you need to do is, if you have been given that it forms carbon monoxide, then you will do the reaction in terms of monoxide. That makes sense, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Please copy this down. I think if I would have solved like this, then it would have been better. So थोड़ा change कर लेते हैं. Whatever we did here ना. Carbon is limiting reagent. How did we know? No solid residue. So if the carbon is limiting reagent, then the MCR of carbon will be what? It will be less than the MCR of oxygen. It will be like this. It will be like this. And let me just keep it 2.67 Y by X. So Naila, how are you? Are you fine? Good. Fine, sir. Thank you. How are you? I'm good. I'm good. I'm fine. I'm not fine. These students have, like, what I can say, बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने. Right, Sabiha?
By the way, guys, are you clear with the mole concept now? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. You understand it better. You can play with it now. Yes or no? Yes, sir. Okay. Whenever you feel like that you are getting a question which is from 11th standard, no? Then dumb yourself down. Think it like a 8th standard question, 8th standard student. Talk in the terms of biryani, right? जब बिरयानी से समझाते हैं हम लोग को तब समझ में आ जाता है नाइला. By the way, Naila, you understand some Hindi? Yeah, I do understand Hindi. Like I was here in Saudi, so my friends are most, from the north. Achha, okay. Time is not up. I need to revise. Yes, you need to revise more, obviously. Yeah. Not Naila, you. I'm talking. Saima has sent me a message. He's saying that mole concept is not very pakka, but you will slowly get better, guys. Okay. The only problem that we are going to have here is the chemicals that we are going to see. That is why I have shown you like very weird looking chemicals also, so that you will be able to solve if you get any easy looking chemicals. Okay. So ये तो सपने में नहीं सोचा होगा आपने, ऐसा सवाल आ जाएगा. CA3PO4 whole twice. This could be made a bit tougher if I ask the grams also, but we did not ask the grams, just moles. So Naila, how was your 11th standard? It was okay. It's like, yeah, a bit tough for me. Yeah. Specifically chemistry or overall? It was physics. Physics was for you. Chemistry was fine. Chemistry was easy for me. I don't know why. It was hard for That's everyone. good. Then that's generally it is very hard for everyone. They don't. I mean, generally people don't like it also. Okay, so that means you spent a good amount of time with chemistry. Right? Yeah. Like, do you have any weak portions in chemistry from 11th standard, or everything is fine with you? I think the periodic function, the table, that chapter, periodic. periodic concept and classification. Periodic properties and classification. Yeah. Okay, so you're not able to. That was a bit. So the trends were a bit difficult to understand. Yeah, that because when during 10th chapter, periodic classification was deleted in 10th, so it was tough for me in 11th. So was the teacher teaching like you have done this in 10th standard, or were they teaching like you have not done this in 10th standard? You have done it in 10th, right? So you will understand it. I was CBSE in 10th. In 11th, I was state syllabus. So the entire syllabus change was a bit difficult for me. Okay, so you are now in state, okay, fine. Yeah. So which state? Kerala. Okay, fine. So nothing is related in Kerala? It's same, but it was like basic. We just in Kerala state, we just learn the basics. Not like in CBSE. Okay, but like the chapters are same, right? In 11th and 12th, or Kerala or Yeah, CBSE? I think so. That we follow NCRT, but I think some chapters are deleted or something. Okay. So now you have started the school. What's going on? Which chapter is going on? Actually, I'm on my vacation. My school starts on May 1st. Starts on May 1st. Okay. So you will be doing school. You are doing schooling in India, I guess now, right? Yeah, I'm actually on my vacation here. Achha. By the way, guys, Justine, Sabiha, Shaima, and Zainab, are you guys done? Yes. Yes, sir. So that's it for today. Thank you for the extra half an hour because we have done only